Assalamu alaikum. My topic is anti-inflammatory effects and my subtopic is acetic acid induced writhing test. First, we talk about anti-inflammatory effect. Anti-inflammatory effect is the property of a substance or treatment that reduces inflammation or swelling. Anti-inflammatory drugs make up about half of analgesics, remedying pain by reducing inflammation, as opposed to opioids, which affect the central nervous system to block pain signaling to the brain. एंटी इफेक्ट्स इसका मतलब ये है कि बेसिकली वर्क करती हैं एज एनाल्जेसिक्स, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो एज एनाल्जेसिक ऐसे काम करेंगे कि वो फिजिकली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे और पेन को रिड्यूस करेंगे रादर देन अदर पेन रिलीविंग एजेंट्स लाइक ओपियोइड्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और पेन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो हैं वो एज एन एनाल्जेसिक काम करते हैं. If we talk about acetic acid induced writhing test, the acetic acid induced abdominal writhing test that has been used as a screening tool for assessing analgesic or anti-inflammatory agents. Pain is induced by injection of irritants into peritoneal cavity of mice. The animals react with characteristic stretching behavior, which is called writhing. Writhing is defined as a stretch, tension to one side, extension of hind legs, or contraction of the abdomen so that the abdomen of the mice touches the floor, or turning of the trunk. यानी कि एसिटिक एसिड इंड्यूस किया जाता है माइस के अंदर और टू प्रोड्यूस द पेन इफेक्ट, और जब ये पेन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा तो डिफरेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स डालकर ये मालूम किया जाएगा कि वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या नहीं. और राइटिंग बेसिकली एक स्ट्रेचिंग मैकेनिज्म है जिसमें माइस जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और उसकी एक्सटेंशन होती है हाइंड लेग्स की और उसके जो एब्डोमेन है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. Any writing is considered as a positive response. Analgesic activity of the test compound is inferred from decrease in frequency of writings. Activity किसी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तब पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी जब माइस की राइटिंग्स में कमी आएगी. Acetic acid induces an inflammatory response in abdominal cavity with subsequent activation of nociceptors. When animals are intraperitoneally injected with acetic acid, a painful reaction and acute inflammation emerge in the peritoneal area. Constriction induced by acetic acid is considered to be a non-selective etinosusceptive model, as acetic acid acts indirectly by inducing the release of endogenous mediators which stimulate the nociceptive neurons that are sensitive to non-steroidal anti-inflammatory drugs, to narcotics, and other centrally active drugs. Constriction जब induce करता है acetic acid तो वो एक नॉन सिलेक्टिव एटिनोसिसेप्टिव मॉडल है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो एंडोजिनस मीडिएटर्स को इनडायरेक्टली इंड्यूस कर रहा है. तो ये जो है चीज़ नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स को जो है वो स्टिमुलेट कर रही है. नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स जो है वो सेंसिटिव है नॉन एनसेड्स के, नारकोटिक्स के और दूसरे सेंट्रली एक्टिव ड्रग्स के जो कि लाइक ओपियोइड्स. तो ये चीज़ जो है राइटिंग टेस्ट की एक सिग्निफिकेंस इसमें से मालूम होती है कि ये टेस्ट इसलिए हमारे लिए क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए हम उन मेडिएटर्स को मतलब कि इंड्यूस करवा रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेंसिटिव हैं हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की, जिनकी एक्टिविटी हमें मालूम करनी है. एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स दैट कॉम्बैट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एसिटिक एसिड. अब हम उन एजेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि एसिटिक एसिड के रिस्पॉन्स को नलिफाई करते हैं. Although non-steroidal anti-inflammatory drugs are mainstay of the treatment of a variety of painful conditions, various NSAIDs and their fixed dose combinations are routinely employed in the clinical practice to control pain. Though these drugs are effective in controlling pain, their wide range of adverse effects are the biggest limitations in their use. Because of the side effect profile of NSAIDs, the patients are inclined to choose an alternative system of treatment. यानी कि NSAIDs जो हैं
though they are very crucial drug of choice, they have been employed for a very long time, but they have a wide variety of a wide range of adverse effects. That's why patients are opting for some other options. Mostly patients who have who have gastrointestinal problems, they can't go for NSAIDs because it affects the mucous lining of the stomach. So if we talk about some other anti-inflammatory agents, uh, rather than NSAIDs, and which are also effective against the acetic acid writings. So we have gelsolin, an active actin scavenging protein is responsible for depolymerizing and capping of actin filaments, which are normally released in circulation upon cell death. Actin filaments जो है सेल डेथ के ऊपर सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं। सो जो गैल्सोलिन है वो एक एक्टिव स्कैवेंजिंग प्रोटीन है और ये इस इन एक्टिन फिलामेंट्स को डीपॉलीमराइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अपनी एक्टिन एक्टिविटी के लिए जेल्सोनिन जो है डिपेंडेंट होता है फ्री कैल्शियम पे और पीएच पे और PIP2 पे। Gelsolin is generally regarded as an injury recovery protein due to its interference with fibrosis process in transgenic GSN null mice. In addition, gelsolin is reported to bind inflammatory mediators such as platelet activating factor, lysophosphatidic acid. The gelsolin acts as a buffering agent in inflammation, which acts by sequestering the bioactive mediators of inflammation, localizes the inflammatory and immune reactions. Then on the other hand, we have a drug, diclofenac sodium. Let me just explain gelsolin very quick. So I forgot to explain this part. Gelsolin is generally regarded as an injury recovery protein. Gelsolin जो है एक injury recovery protein के तौर पे act करता है और जो है इसका it interferes with the fibrosis process in transgenic mice. ठीक है, तो जो fibrosis का process है transgenic mice में ये उसके ऊपर act करता है। ये इसका काम है inflammatory mediators से bind करना like platelet activating factor, lysophosphatidic acid and तो जो है basically gelsolin as a buffering agent, as a preventing agent काम कर रहा है inflammation या inflammatory response में. In experimental studies, it was observed, if you talk about diclofenac sodium, which is a quite popular anti-inflammatory agent, तो इनकी in experimental studies में ये observe किया गया है कि जो epidurally administered diclofenac sodium यानी कि epidural region से जो diclofenac sodium administer किया गया है mice को, चाहे वो single dose में था या repeated dose में, it was observed that it decreased the writhing number in visceral pain model in both groups when compared to the control group. ठीक है, चाहे आपने उसको सिंगल डोज में दिया या फिर उसको रिपीटेड डोज में दिया, दोनों ही ग्रुप्स ने एक अच्छा रिस्पॉन्स शो किया जब उसको कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर किया गया. In the repeated dose group, the writhing numbers were lower than the ones in the single dose group, but this was not statistically significant. This result showed that tolerance to diclofenac sodium did not develop with repeated use of the drug. यानी कि डिक्लोफेनाक सोडियम चाहे सिंगल डोज में दिया जाए या रिपीटेड डोज में इतना डिफरेंस नहीं है, और अगर आप रिपीटेड डोज में भी दें डिक्लोफेनाक सोडियम को तो इतना उससे टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई माइस के अंदर. So it's a quite good anti-inflammatory agent when we are dealing with the acetic acid writhing response. Then we have another anti-inflammatory agent which is known as the Shamula, and it is an Ayurvedic medicine which has been used and which the studies of which has been conducted to study the effect against acetic acid writhings. So when the studies were conducted, it was observed that groups which were treated with Dashmala high dose and diclofenac sodium, first was combined with diclofenac sodium, and it showed highly significant reduction in number of writers. And the group which was treated with Dashmula low dose showed significant difference as compared to the control.
the degree of analgesia was greater in a group which was treated with dashmula high dose as compared to a group treated with diclofenac sodium. This difference was statistically insignificant. Though the जब हमने एक ग्रुप को दशमूला हाई डोज दी और एक ग्रुप को हमने डिक्लोफेनाक सोडियम दिया, तो दशमूला से अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ एज कम्पेयर टू डिक्लोफेनाक सोडियम, दो द difference was insignificant. Like it was not a great difference, but there was a difference. यानी कि दशमूला is much better, not much better, but it's a little better than diclofenac sodium. So what is Dashmula? It is a combination of roots of 10 plants, a standard Ayurvedic remedy for the treatment of pain. If we conclude our topic, it concludes that various pharmacological agents can be used to mitigate the inflammatory response produced by acetic acid. यानी कि बहुत से एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, COX-1 इनहिबिटर, COX-2 इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं, लेकिन अगर there are some reservations when it comes to NSAIDs. It can leads to various adverse effects. क्योंकि हमें इस वजह से जो है दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, और जो द ऑप्शंस वी डिस्कस्ड बिफोर, दे आर वन ऑफ दोज ऑप्शंस. थैंक यू.